In a PFT, spirometry is the basic or initial test by which we can find out whether patient has any obstruction like any asthma or COPD type case or he has low capacity. Spirometry is the part of the pulmonary function test. Pulmonary function test is made of at least 3 to 4 different tests. श्वास कम सांस बोलते हैं, तो आपकी सांस को जोर से खींचना है और बाद में आपके सांस को जोर से बाहर निकालना है. पेशेंट थी, बहुत टेस्ट को बैठी थी और सांस टिपिकल उसके पीछे टेस्ट बराबर करती कि नहीं, तो मैंने बोला तू सांस को जोर से खींच और जोर से धक्का मार सांस को. इन स्मोकर्स इट्स मोर हेल्पफुल. आई मीन इट्स डॉक्यूमेंटेड and the research papers show that before your X-ray becomes abnormal, the spirometry test becomes abnormal in a quite early stage. And if you stop smoking at that point of time, then it's reversible change. If you stop smoking, your lung functions become normal within the next 5 years. एक बार ऐसे हुआ कि एक पेशेंट आया था, नवरात्रि का सीजन, जिस ढंग से वो टेस्ट कर रहा था ना, आई मीन ऐसे कुर्सी में जंप करके टेस्ट कर रहा था. Hi everyone, welcome back to a brand new episode of the Math Therapy Sessions podcast. Our guest for today is Mr. Vasant Shetty. He's completed his BSc in chemistry from Mumbai University in 1972 and learned PFT in the respiratory medicine department at KM Hospital. Mr. Shetty was the first paramedic to open a pulmonary function lab in Mumbai. He is a faculty to the spirometry workshop conducted by the Indian Chest Society since last 15 years and regularly trains technicians to master PFT. The audio podcast is available on Spotify and Anchor. The links to that in the description down below. Drop a like if you like this video and consider subscribing if you end up loving it. And also don't forget to comment down below your thoughts on the podcast. Till then, enjoy the episode. So, Mr. Shetty, what exactly is a pulmonary technologist? Well, pulmonary technologist is basically a pulmonary function technician, where they measure the lung capacity and the condition of the air passage. Means if your air passage is blocked like in asthma or COPD or due to smoking, so whatever force you apply during the test, your readings will be very low. So it indicates that you have some problem. And we make the patient to breathe out maximum during the test. So it will give it the capacity. So mainly pulmonary function test, technologist has to get the right performance from the patient to achieve at least 95% of his capacity and 100% effort to measure the condition of the air passage. So it's basically seeing the capacity of the lungs. Yeah. If you put into layman terms. Yes. So a lot of people use the term PFT. A lot of people use the term spirometry. Yeah. Sometimes it's used interchangeably. So what exactly is the difference, or are they the one and the same? The spirometry is the part of the pulmonary function test. Pulmonary function test is made of at least 3 to 4 different tests. Okay. And it has different indications within that. Spirometry is the very basic test. Like in the ECG, in a cardiac things, we start with blood pressure or ECG to find out the initial abnormality. So similarly, in a PFT, spirometry is the basic or initial test by which we can find out whether patient has any obstruction like any asthma or COPD type case or he has low capacity. Like in the COVID case, a lot of people's lungs were involved and their capacity was reduced. So we can find out there are certain lung diseases where their capacity is reduced. So we can find that. So it's a basic test. Then you have to find out because of those whether you have other changes occurring in your lungs. Okay, so like your oxygen level is going down. So they call it diffusion test, by which we can find out whether your lung is affected and is not giving the oxygen from the air to the blood, by means your oxygen level go down. So these are the very advanced tests. So PFT is mainly of different tests. Spirometry is the very basic test Understood. among the PFT. But a lot of people
When they recommend, they either write just the PFT and spirometry. So when the patient come to us with writing PFT, we either consult the doctor, referring doctor, whether he wants the complete PFT. When they write complete PFT, it's the spirometry and plus the advanced studies. So spirometry is a part of PFT, Correct. but it's not PFT. I mean, those are two different things. Yeah. Is like you can call it, is the PFT is the surname and the spirometry Is the first name. their first name. Understood. So if I'm a patient, can I do a PFT test done on my own, or do I need to get a prescription from the doctor? Yeah, it's basically a doctor-driven test. Okay. Why we don't recommend the patient to come directly? Because most of the patients who come to us either has cough or breathlessness or or wheezing of those type, and we don't do the patient who are active TB. So we preferably make you to get recommendation from the doctor whether you are free of tuberculosis, Okay. which is active. Otherwise, if you don't have this, if you are sure that you have nothing of tuberculosis, you can definitely can come directly to do the test. But You can? You can, but sometimes we have to just evaluate the person and make the recommendation to the doctor. Suppose there's a patient who's 40 years of age, has no disorders, no history of smoking, his blood tests are normal, and sometimes he thinks, let's do this test. So he can do that? Yeah, he can. Because, sometimes you have the silent changes in your lungs, like due to pollution. Now, when we do a lot of people, they say, I don't have anything, nothing. Means I have no asthma, I don't get breathless. And when we do their test, a lot of time we see their lung functions abnormal. The spirometry test is basically abnormal. And, it could be because of the environment. The pollution is a lot. So, yeah, in some people it does help. We can find out whether you have developing some early changes. And in smokers, it's more helpful. I mean, it's documented, and the research papers show that before your X-ray becomes abnormal, the spirometry test becomes abnormal in a quite early stage. And if you stop smoking at that point of time, then it's a reversible change. Understood. I mean, if you stop smoking, your lung functions become normal within the next 5 years. That's something which a lot of people don't know. Yeah. In the test, they by equation, they have formulated some equation, and they give you the lung age. Through the test? Through the test. Okay. It's the approximation. It's not the precise. But it gives you the idea of... how long the lungs will last? No, means suppose you do your test and your readings have come about, suppose some number, 2.5 liters. There are certain parameters in their lung function, in the spirometry. So one of them is FEV1, which is the volume 1 exhaled. 1 second में आप जोर से कितना सांस छोड़ सकते हैं. Okay. That is an indication to calculate your lung age. So for your age group, if you are supposed to get 2.5, and if you are giving me about 2 liters, it could be normal yet. Understood. Okay, but it is deviating. So based on that, it gives you suppose that 2.5 readings is the absolute reading for an age of 40 years guy. You give me a reading of 2 liters. Now that 2 liters could be a reading of an age of 45 person. Absolute reading means expected value. Then we say that your aging is become from 40 to 45. So in some smokers, we find that they are 40 and their FEV1 readings is of a person of 60. Wow. Of a normal person. Yeah. Okay, so definitely there is a aging. Means you are 40, but you are giving me a normal reading for the person who is age 60. It acts like a marker. And it's a marker. It's not the precise. It's basically it's the mathematical calculations based on the data collected on a normal person worldwide. Understood.
So apart from smokers, who are your clientele? Who are the patients who generally come to you to get PFT done? See, basically, these most of the patients are referred by the chest physicians mainly, but there are other faculties. They also refer the patients. Now, what type of patients we get it? Basically, these are the patients who have some symptoms Right. like खांसी है, सांस फूल रहा है, Dama hai. I mean, Same. wheezing है ना, सिट्टी जैसे आवाज बजती है. So you want to evaluate what type of means obviously wheezing, and those are the sometimes symptoms for asthma or other lung problems. So you want to evaluate because of these symptoms how much your lung is affected. Understood. Or there are patients who are going for surgery. Usually, nowadays it's most of the doctors who patients are going for heart surgery or abdominal surgery, and the age factor 60 plus, they recommend for PFT. Or you are a smoker, they send you for the testing. Or you are already on a medication. So we want to evaluate what is the prognosis. आपको दवाई की इफेक्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही है. तो ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं. You can gauge the efficacy of the drug. और some patients ड्रग के साइड इफेक्ट्स रहते हैं, like chemotherapy. It has a side effect. So this patient can develop lung abnormality, like fibrosis they develop. So there the PFT helps. So these people are being sent for the test periodically. Some come every 6 months, some people come every 1 year. Now, I have been with the VIPs, a film actor who has getting treatment from UK, but he used to come for testing when I was working in a hospital every year, because he has to send that report to his doctor in UK. Okay. So these are different conditions, depending on what conditions you want to do lung function. And then what about occupational workers? Now, as per the Factory Act, आप कोई केमिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, नहीं तो पेस्टिसाइड कंपनी है, बराबर, नहीं तो लॉट ऑफ अभी जो फार्मा कंपनीज में जहाँ एक्सपोजर रहता है अल्टीमेटली एवरीवेयर द केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड, तो वहाँ मैंडेटरी है ये लंग फंक्शन टेस्ट बाय फैक्ट्री एक्ट. एवरी ईयर यू हैव टू डू इट. और सम डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एक्सपोजर यू हैव. नाउ वन ऑफ द कंपनी आई यूज्ड टू डू एवरी 3 months. अब ये कंपनी क्या बना रही थी, तो हमारे अपने घर में जो कपड़े धोने का साबु आता है, तो उसमें वो एंजाइम्स रहते हैं, देश की तुम कपड़े डालो, कपड़े पूरा उसका ये निकल के आएगा, बट द वर्क इज डन बाय सम केमिकल्स विच इज कॉल्ड द एंजाइम्स, एंड देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ द side effects of those things on the worker. So every 3 months I used to do those people for testing. So it depending on what conditions, what exposures, and there are laws by the Factory Act when to do the test. So in occupational it is becoming important things. Like asbestos company, if you are working, then you can develop asbestosis. Cotton industry होगा तो वहाँ के वो cotton इसका. Say like even if someone wants to join a new company, it is nowadays mandatory in these companies, because later on there should not be a problem of the आप कंपनी को sue कर सकते हैं ना. बराबर. तो they want to companies are evaluate getting before. that done early. वैसा. So one interesting thing what I wanted to ask you is how did the pandemic affect you? COVID आया, and how was so आपके profession में how did it affect you guys? See, हमारे टेस्ट में पेशेंट टेस्ट होने तक कंटिन्यूस हमारे पास रहता है. Like in blood test, you collect the blood and patient go. Whereas here is the one-to-one reaction and action throughout the procedure. बराबर. The test takes about half an hour for each patient. Okay, so the half an hour patient is with us and continuously blowing in the machine. So in COVID, we were the direct exposure people. बराबर. So absolute no business.
means no patients. We have stopped doing the test because of the उसमें जो Because I think same like with dentists who deal with the mouth, आप लोग का भी it's with the mouth, right? And it's blowing. it's the blowing Blowing out. and उसमें क्या बताया था कि जो aerosol आता है, if you have seen early reports about the COVID, that aerosol is transmitting the disease. So obviously we were exposed continuously. बराबर. So we last 2 years, I mean 20 and 21, almost we didn't do any patients. But after like अभी थोड़े last 6 months से थोड़ी चीजें अच्छे हो गए. हाँ, तो अभी Normal we are सी आ doing गई. it. But that now we are doing patients who are only referred by the doctor. Okay. Earlier we used No to, walk-ins. as you asked me earlier, whether you can come directly. No walk-ins. Now we don't take walk-ins unless and until patient is seen by the doctor and say no problem. But अभी उल्टा हुआ रहेगा because people are so aware and so cautious now कि people now the work is increased because post COVID, a lot of patients have developed lung problem, like lung symptoms, so basically a breathlessness and those things. So we are getting actually more patients post pandemic. बराबर. One thing I wanted to ask is why did you choose to become a pulmonary technologist in the first place itself? Yeah. Why did you choose this as your career option? See, I was getting a job in those days. This is story of the 1970s. Almost 50 years back. Yeah. So I had got a job in an accounts department of a government. Okay. But somehow I don't, मेरी की ये है कि मेरे को ऐसे ये टाइप का जॉब नहीं चाहिए कि कंटिन्यूसली लिखते बैठो. आई वांटेड समथिंग लाइक Dynamic. कुछ तो डायनामिक होना चाहिए. आई शुड लर्न समथिंग ऑल द टाइम. तभी KEM में पोस्ट वेकेंट हो गई थी. आई गिव एन इंटरव्यू. टू माई नॉलेज ओनली KEM हैज द फैसिलिटी ऑफ लंग फंक्शन That time. in those days. And if I'm not mistaken, Jaslok Hospital has. Otherwise, all over Maharashtra, there weren't any pulmonary lab. So I joined as a technician, as a refresher. No knowledge of what it is. Because there were courses for biochemistry in those days. Like you do your regular blood test. But for PFT, it wasn't. तभी भी नहीं था, आज भी वो कोर्स नहीं है. अच्छा. अभी भी नहीं. अभी भी नहीं है. I mean, the government should add in DMLT. When you say diploma in medical laboratory technician, this should be pulmonary function should have been a part of it. that curriculum. They only concentrate on the blood test, but there are a lot of other new avenues are opening. When we spoke, you said you have done BSc in chemistry. Yeah. So how did the jump get into? See, in those days, if you want to do any technician job, or even if you want to join any pharma company in a lab, you must have the basic qualification as BSc chemistry. Okay. Somehow my lab in pharma work, I gave interview, but it didn't work. I mean, I didn't get the job. So you did BSc in chemistry to get a pharma job. Yeah, means any laboratory if you want to join, whether it's a pharma lab or the biochemistry lab or any lab related work, you have to have the science background. Okay. I mean, that was the criteria. Right. Even now it is. So you tried with different pharma companies, it did not work out. It did not work. And this work. So then how did you come to know about this program? It didn't know the program. I Okay, joined. so there was a post like this. in There's a KEM. post like this. I knew someone in the KEM hospital, so he Okay. said there is an opening. We applied. By good luck, I got the job. Then I have to get myself trained. Right. I mean, Yeah, because there is no means there's no nobody is formal going training. to teach you. Means Right. there wasn't anyone outside who will teach you. Right. So I have to get learned from my boss. He is one of the top chest physician in this field in India. Right. He is the pioneer, Dr. S.R. Kamath, and he was pioneer in air pollution survey in India for the first year. So
He taught me for a week because no medical knowledge, so I didn't understand anything what he's saying. So I have to go to in the library and read the book in our in our field. What are the definitions? Like when he says certain word, I must understand. Now he says particular parameter like FVC. What is that FVC? He said FE1. What is that? So he was giving me a lecture, but because he has trained chest specialist, he was giving a lecture of his level. Right. Whereas I am a very layman, so it was difficult for me to absorb. So Was there any moment where you thought you want to run away from this and not do this further? Or you just give it up? See, because what he is talking, I am not understanding. Right. So I want to learn the theory of the test, but this test is mainly theory is required. It's essential, but it's more of the practical. You should, because you have to handle the patient continuously, so it should be more of the practical things. So my boss didn't taught me the practical. Who is my guide for the practicals? Can you imagine? Huh? No, I can't. The ward boy. So he taught you the practical. He was much experienced in the Right. practical things. I think, and that's what happens in medical also, feel. So he taught me how to operate the machine, how to give the commands to the patient. It's not the precise, it's exact, but he has the basics how to do that. He gave you an idea as to how the machine how works. to operate the machine and how to tell the patient to do the test. बाकी का जो उसका calculation है, I have to learn from the book, because in those now it is a computerization, so everything you make the patient to do the test, everything is through software. Everything is computerized, so you get the reading. In our time, I have to literally sit down and calculate the graph. We used to get the graph on a graph paper, and then we have to take the scale, फुटपट्टी लेके उसका मेजरमेंट करके जो कैलकुलेशंस करने रहते हैं ना, वो हमको लिटरली बैठ के कैलकुलेशन हर एक ग्राफ की करनी पड़ती थी. वो उस वार्ड बॉय को नहीं आती थी, लेकिन वो ग्राफ कैसे निकालने का उसको आता था. तो ही टॉट मी हाउ टू गेट द ग्राफ. देन आई हैव टू लर्न माई सेल्फ हाउ टू कैलकुलेट इट. Right. Read the books. And then there were other doctors later on joined, like Dr. Mahashur. He's one of the leading chest physician. Unfortunately expired about 2 days back, but he helped me a lot later because he used to teach me on my level. So we used to do the test and we used to sit down with him. And it's the mutual give and take. We used to tell him practically what we are doing, what are the problems we are suffering, what is the graphics, and then he used to explain us clinically how they correlate the graphics. It's very essential for technician to understand when they do the test. And did the staff come to know that you were like, the ward boy was helping you out, or they were okay with it? Nobody. In those days, now the work is increased a lot. Even the KEM out, कितने लोग आते हैं OPD में, बराबर. OPD में. तो भी वो जमाने में when I started there were in a week 4-5 patients. Okay. And when I left KEM there were 10 patients per day. Wow. And later on whenever I went, I found that there were appointments where after 15 days, a month, that much workload has increased over a period. Barabar. Any incident or memory you want to share from your KEM days? The KEM days were with in terms because I was young, so you enjoy the life. But at the same time, I had a group in KEM from different departments. Like I have people from biochemistry. I have a group from physiotherapy.
we enjoy, but at the same time, a lot of people, they were doing MSc, PhD. So there was means education के हिसाब से भी I used to learn a lot from my seniors. Right. कि भाई क्या करना पड़ता है. तो मुझे आदत लग गई कि जाके लाइब्रेरी में बैठ के जर्नल पढ़ो. मेडिकल जर्नल पढ़ने की जो मेरी आदत है, जिसका मुझे बाद में भी फ़ायदा और अभी भी फ़ायदा हो रहा है, जो अभी कोई भी नहीं कर रहे हैं. जो मेरे फील्ड में जितने भी टेक्नीशियन, देयर आर वेरी फ्यू हु गो एंड रीड द लिटरेचर अबाउट देयर ओन थिंग्स. लेकिन वो KMA में था, प्रॉब्ली दैट हेल्प मी. माई बॉस यूज टू टेक एवरी थर्सडे देयर वॉज अ जर्नल क्लब. सब डॉक्टर्स को बैठने पड़ते थे कंपल्सरी, प्लस ऑल टेक्नीशियंस. जितने भी हम टेक्नीशियन, हमको जाके लाइब्रेरी में कुछ हमारे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ के आने का, एंड वी हैव टू रीड दैट आर्टिकल, समराइज दैट आर्टिकल इन ए जर्नल क्लब. तभी हम लोग बहुत गाली देते थे उसको. अरे क्या झंझट लगा है, लाइब्रेरी में जाके बैठो, पढ़ो. BSc तक पढ़े, अभी भी पढ़ना है बराबर, बट उसका फायदा आज हो रहा है बहुत बहुत. वेयर आई एम नाउ बिकॉज ऑफ दोज हैबिट्स. राइट. मेरा कहने का यही है, जो भी ये फील्ड में है, एनी फील्ड, यू हैव टू बी अपडेटेड ऑल द टाइम. जस्ट यही करना है तो आय मीन क्या मराठी में बोलते पाठी टाकणं, तर मग तुम्ही काय एन्जॉय करणार. बराबर. पण आता नवीन पिढीमध्ये जे बघितलंय, जे खूप लोक पाठी टाकतात, फार थोडे लोकांना की ज्यात दे हैव द इंटरेस्ट. रुचि होना चाहिए. रुचि होनी चाहिए, क्योंकि क्या चल रहा है, देर आर सी माई टेस्ट हैज सर्टन स्टैंडर्ड्स. ऐसे नहीं कि भाई तुम मशीन में फूंक मारो, रीडिंग आई दे दी. काफ़ी लोग ऐसे करते हैं. मेरे पास कितने भी डॉक्टर्स, देर आर लॉट ऑफ डॉक्टर्स दे आर सेंडिंग देयर पेशेंट्स फॉर रिपीट टेस्ट टू मेक श्योर कि पहली टेस्ट गलत है. बराबर. काफ़ी जो अभी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन रिप्यूटेड हॉस्पिटल छोड़ के जहाँ भी टेस्ट चलती है, वहाँ वेरी फ्यू जगह जो काम करने वाले, उनको टेस्ट की नॉलेज बेसिक मालूम है. ठीक है कि वो सिर्फ पार्टी डालने का ही काम कर रहे हैं. अभी हम लोग कोर्स भी चलाते हैं वंस अ ईयर, तो वी नो कि 5-6 साल काम करके भी उनको कुछ नहीं आता है. या आई वाज गोना आस्क यू, लाइक बिकॉज आप बोल रहे हो कि इतना डेफिसिट है गुड टेक्नीशियंस का, सो हाउ डू यू फिल इट नाउ व्हेन यू सेड कि यू डू कंडक्ट कोर्सेज जहाँ साल में एक बार, दैट्स अ गुड वे ऑफ गिविंग इट बैक टू द टू दिस फील्ड. You are also training other people just the way you have learned from them. Yeah. From your elders, Basa. But you are always not into this. Like your family history was basically your father was working. Yeah, my father was working in a textile mill, right, as a supervisor. Right. So then and in acha. No, wait. Back then it was a very super lucrative profession. Yeah, working in a textile mill. Yeah, so you were never interested in. I was. But then. Because if you see the history of Mumbai, textile industry, मुंबई जो ऊपर आई वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ही है, बाद में बाकी की बात. तो ये मैं बात कर रहा हूँ अगेन 1970s की. तभी बूमिंग इंडस्ट्री थी, जॉब भी अच्छी तरह से मिल रही थी, और इफ़ यू आर डन सर्टन कोर्सेज यू यूज टू गेट दी गुड सैलरी एंड अपॉर्चुनिटी सब था. बट माई फादर वॉज वेरी मच रिलक्टेंट. So he said no. He said no. Okay, that's weird because. Weird. I was so angry with him. But after 10 years down the line, the industry totally collapsed. Yeah. So I feel that my dad has the क्या बोलते हैं, आगे का उन्होंने देखा होगा क्या होता है. Visionary thing. Visionary thing. Yeah. So I thank my dad. तो उसके बाद like you had mentioned you had an option between doing a government job and a corporate job. Yeah. Like a private थोड़ी job. क्या है कि probably जिस atmosphere से हम आते हैं, like your family thing, everyone want the secured things, Yeah.
सो कॉरपोरेट थिंग से गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, ये मेंटेलिटी तैयार हो जाती है, तभी भी थी। बराबर। तो ये अच्छी मिला और मुझे समहाउ, मैंने बोला ना कि आई वॉज समहाउ इंटरेस्टेड इन दी समथिंग रिलेटेड टू दी मेडिकल फील्ड। So, जो कॉर्पोरेट जॉब था उसमें ऑप्शन क्या थे, लाइक एन MR सेल्स ना? MR मीन्स मेनली MR का जॉब मुझे मिला था। तो बट मेरी ऐसे ये पर्सनालिटी नहीं है सेल्स टाइप की कि मैं जाके मेरा माल किसको बेचूं, चिटका डालूं। हाँ, ऐसे नहीं होता है। तो मेरी उस पर्सनालिटी नहीं, और मेरी वो क्या, दैट्स नॉट अ कॉलिंग ऑल्सो, मतलब वो तो आई वाजंट कंफर्टेबल मीन्स एक्चुअली। इफ तभी आप देखते थे तो MR के जॉब करने वालों को सैलरी अच्छी थी, एंड यू बिकम द सेल्स मैनेजर टू द सेल्स VP in a pharma company in those days. Means if 10 years down the line, I know few of my friends, they were VP. लेकिन मेरी पर्सनैलिटी नहीं है कि भाई मैं जाके लोगों के सामने बैठ के मैं माल बेचूं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 50 years बैक की चीज, लाइक इसलिए मैं then didn't opt it, though I got the job. बट are you happy with your decision? Yes. Like you said, in the life there are ups and downs all the time. बराबर। Okay. So there are certain decisions you miss. Like KM Hospital, I left just opportunity जो बोलते हैं ना प्राइवेट, अभी आपने बोला कॉर्पोरेट में, बराबर। तो KM में काम करने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत वो गवर्नमेंट मेंटालिटी आती है, बराबर ना? बराबर। तो somehow I was uncomfortable. वो जो एक बार वो मेंटालिटी में आप फिट बस गया ना, तो आज तुम्हारे पूरे जिंदगी में आप सुस्त ही बैठेंगे, क्योंकि 9 बजे आना है, 5 बजे जाना है, बराबर। काम नहीं करेगा तो भी सैलरी आती है, बराबर। तो तुम सुस्त हो जाते हैं। और मेरा थोड़ा कैसे है कि जो जिस ग्रुप में मैं था, नहीं तो मेरे फ्रेंड्स थे, नहीं तो दे वेर वेरी एक्टिव इन द सेंस ऑफ कि काफ़ी छोड़ के भी चले गए, क्योंकि लाइक दे डिड देयर MSc, दे डिड देयर PhD एंड दे मूव्ड ऑन। तो मैं भी ऐसे थोड़े ये था कि अरे ये जिंदगी में मैं म्यूनसिपैलिटी में काम करने वाला हूँ क्या? तो देन आई चेंज द हॉस्पिटल टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। ओके। सो सम that decision was good or bad, the different thing, but you miss certain things. एक चार्म होता है, बराबर। तो हर एक वो क्या बोलते हैं, जो ये रहते हैं ना एटमॉस्फेयर, उसकी खुद की एक चार्म रहती है। बराबर। मैंने ऐसे जॉब चेंज करते करते मैं गया फ्रॉम KEM टू ब्रिज कैंडी टू बॉम्बे हॉस्पिटल, एंड देन फ्रॉम बॉम्बे हॉस्पिटल I left and I then started my own lab. Okay. I must have worked as a employee for 25 years, and I am doing my first exclusive lab for the last 25 years. And which is better? Personal things. Okay. Like खुद का बॉस होने से कैसे है कि there are certain respects. क्या हो गया जब भी मैं शुरू किया ये, I'm proudly say, तब तक जितनी भी लैब्स थी, दे वर आइदर विद द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और चेस फिजिशियंस, दे हैव द लैब, दे हैव एम्प्लॉयड द पीपल, और दे वर डूइंग देमसेल्व्स द PFT ऑफ द पेशेंट्स। डॉक्टर खुद ही पेशेंट्स की टेस्ट करता था, नहीं तो उसके पास जो रिसेप्शनिस्ट बैठता है, नहीं तो ये रहती है नर्स रहती है, उसको PFT करने बोलता था। बराबर। तो देर आर लॉट ऑफ लैक्यूने। तभी देखो सबर्बन के पेशेंट को अपने समझो अंधेरी से बोलो, किसी को भी टेस्ट करना है तो नज़दीक का एक ही हॉस्पिटल था, नानावटी, नहीं तो यू हैव टू गो स्ट्रेट टू द महिम हिंदुजा हॉस्पिटल जस्ट फॉर स्पायरोमेट्री। तो दैट देयर वाज अ लैक्यूने। बराबर। तो देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि भाई मैं ही लैब क्यों नहीं शुरू करूँ। Who is a non-medico? I am in a medical field, but I am not a doctor. Right. So I am a paramedic. But mine is the first lab started by a paramedic, a PFT lab.
In So Mumbai. I'm proud of it. Mumbai. Rather, you can, I don't know, but Maharashtra probably you also. can India also. in India you can call it. And that took almost 25 years back. So And you're proud of that. I'm proud of that because after starting that, few years I did myself because ultimately this is a service oriented. Right. कहाँ भी जाओ तो आपको ही जाना है. कोई डॉक्टर मेरे पास पेशेंट रिफर कर दे, they will always expect that I should go and do the test. बराबर. But over a period when the work increased, I started training the people, appointing the people, paying them a salary. I know like different ways of paying the salary. And I started the things. अभी उसमें मुझे इसलिए प्राउड भी लगता है कि मैंने काफ़ी लोगों को सिखाया, काफ़ी लोगों को जिनको लाइक किसी का घर चल रहा है. सो यू एक्चुअली क्या बोलते हैं जॉब क्रिएशंस हो रहे हैं ना. And एक न्यू करियर तैयार हुआ है. तैयार हो रहा है अभी. मेरे पास this whole PFT career, like Yeah. as a choosing PFT, like becoming a technician and doing PFT as a career, एक create हो गया है. काफ़ी मेरे if you name the hospital in Mumbai and they were working with me, like Bombay Hospital, Ambani, Rich Candy, थाना का एक हॉस्पिटल है, हिंदुजा. The people who are working were my employees were working with me Right. quite a long time. Right. So I should be proud of this. Isn't it? No, you should be. You should be. Yeah, isn't it? Because name the hospital and they are my people. Being the first in any field is a proud moment, and Basically, I'm proud, but at the same time, where they are working, the doctors are happy because these people are giving the very best results. I said कि यहाँ इसमें क्या है कि किसी को मालूम नहीं कि टेस्ट क्या है. कोई भी कुछ भी टेस्ट करके देता है. I mean, मेरे अभी इतने साल के इसमें देखा कि कोई रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आए थे क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि जिन्होंने करके दिए कि क्या देखना है. बराबर. जो भी आया रिपोर्ट दे दिया. इफ यू ब्लो इन अ मशीन समथिंग इज गोइंग टू कम. लेकिन वेदर इट इज राइट और रॉन्ग वन हैज टू. ऐसे रिपोर्ट आते रहते हैं, कुछ भी आते हैं, बट द पीपल हु आर वर्कड विथ मी आर गिविंग द राइट रिजल्ट्स. डॉक्टर्स आर हैप्पी. My next question for you is choosing to become a pulmonary technologist a good career option in 2022? Yes, still there. Because of the pollution and those things, like lung problems are increasing. And this test is being asked as a routine test at most of the places. So yes, if you get trained properly, but the problem is whosoever start the things, I don't know how far they are interested in training the person. वहाँ काफ़ी जगह ऐसे रहते हैं कि भाई एक ही आदमी को 4 काम को बोलते हैं तो like money is important, but you have to see beyond the prism of money. You have it's still you're dealing with good opening means मेरे पास कभी कभी इंक्वायरी आती है कि भाई हमको चाहिए ट्रेन चाहिए. अभी ट्रेन नहीं होगा तो मेरे पास भेजते हैं. देन आई ट्रेन द पर्सन फॉर 3 months and then he go back and do his regular test. But then I observe how he is doing the test. So, what are the opportunities in India and abroad if someone does get trained? Is it still a इंडिया में niche? काफ़ी है अभी भी. लेकिन कैसे रहते हैं कि जो when it comes to the money, जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स है वहाँ ऑलरेडी काम करने वाले टेक्नीशियन तो छोड़ने वाले नहीं है. देखो मेरे पास जो काम करते थे मोस्ट ऑफ देम आर अर्निंग इन द रेंज ऑफ 40,000 to 70,000 अ सैलरी. That's amazing, yeah. जो भी मेरे पास से ट्रेन हो गए हैं तो वो लोग जॉब छोड़ने वाले नहीं है. बट देर आर अदर प्लेसेस वेर यू कैन डू अ पार्ट टाइम जॉब एंड अर्न 15,000. पर्टिकुलरली गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है. इफ यू आर अर्न गो फॉर. मेरे पास काम करने वाली 2 लड़कियां थी. They used to come only 2 hours every day, 2 or maximum 3 hours every day. And I was paying them a salary. Because it depends on how, because see, I was paying the basic amount plus per patient. Barabar. And they were, at the month, they were earning about 15,000. If you think in terms of
8 hour job, it is 60,000 salary. Right. So for girls, it is a good, you can look after your home and earn 15,000 for your family. And what about, say, like going abroad? Getting trained here or going abroad to get trained? Like, what's your take on that? Well, कैसे है कि अपने इंडिया में तो कोर्स नहीं है अच्छा, इसके नहीं लिए, तो बाहर जाना है तो वहाँ के उनके लोकल एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं. यू मस्ट हैव दैट. नाउ इवन आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ व्हेन आई वेंट टू यूएसए, आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 20 years. I did few patients over there. That वो भी एक स्टोरी अलग है. तो I had gone over there because we were working on one international project on asthma prevalence. And it was an international study. तो इसके लिए मुझे accredit करना था मेरे personal. Because it is mandatory that technician has to be accredited by the main center. He is good for the job. तो मैं accreditation करके आया था वहाँ से. मैंने देखा कि मुझे वहाँ जॉब करना है तो इवन आफ्टर 20 years आई हैव टू हैव द सर्टिफिकेट. तो आई हैव टू डू 1 year their certificate course and then get the job. And probably I need some recommendations from here, a strong recommendation where I can join them as a low-level technician and then get the steps up. But if you are a good technician locally in India, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे नॉलेज में और उनके नॉलेज में कुछ फर्क है. कुछ भी लैकिंग नहीं लग रहा था. लैकिंग नहीं लगा. वी हैव मोर प्रैक्टिकल बैकग्राउंड देन दे आर मोर थियोरेटिकल. राइट. एंड लाइक या बट पोल्यूशन है अपने थोड़ा सा. जॉब के हिसाब से बोलना है, फॉरेन जाना है तो वहाँ का कोर्स, वहाँ को आपको कोर्स करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जॉब नहीं मिलेगा. बिकॉज आप ये सब बोल रहे, हाउ इम्पॉर्टेंट इज द रोल ऑफ हैविंग अ गुड मेंटर? के में मुझे केसार कामत और डॉक्टर महाशुर जैसे मिले, डॉक्टर रोहिणी चौगुले. शी वॉज द मेंटर इन द सेंस, अभी जो मेरी लाइफ है, मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, आई वॉज टू शाय टू talk to the people. I was good in my job, but as a mentor, she put me to present the papers to the doctors. Means we have the medical conferences every year for the doctors. So she trained me how to speak, how to express, how to present. You know, like that you have to need some mentor to give you a push in your life. अदरवाइज पार्टी तो डालना ही है. टेक्नीशियन क्या काम करना है, आपने इतनी जगह लैब में देखा होगा ना. काम करने वाले टेक्नीशियन जस्ट जाके काम करते निकल जाते हैं. बट टू गो वन स्टेप अप, यू नीड समवन टू गाइड यू एंड पुट योर मेंटर. क्योंकि हमारे फील्ड में कैसे है, मेडिकल फील्ड में, कि मीन्स लाइक यू आर ऑल्सो डॉक्टर्स, यू मस्ट हैव द कंसिस्टेंसी. और जो रिसर्च अलग अलग चलते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है. आपको उसके ऊपर आपका खुद का भी कुछ स्टडी करना है, तो इससे आपको हेल्प होती है कि आप जब भी पेशेंट करते हैं तो यू हैव टू बी कंटिन्यूसली अपडेटिंग, रीडिंग क्या हो रहा है, कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं कि नहीं. क्योंकि अल्टीमेटली दिस टेस्ट हैज सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गेट द बेस्ट टेस्ट. राइट. यू मस्ट बी फैमिलियर विद दैट. कुछ नया आया है क्या, कोविड के बाद में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए हैं क्या, क्या प्रिकॉशंस आए हैं क्या, वो सब देखना पड़ता है. एंड लाइक यू सेड, समटाइम्स यू हैव इट इन यू, लेकिन कभी कभी एक्सटर्नली यू रिक्वायर अ मेंटर और समवन टू गाइड यू, टू टेल यू कि यू नो इट, जस्ट डू इट. वैसा मतलब कभी कभी खुद में डिसबिलीफ होता है. मतलब लाइक यू सेड, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है कि आता सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा शाय रहते या जो भी रहते. यू नीड समवन टू जस्ट गिव यू अ पैट ऑन योर बैक, जस्ट से कि लाइक यू नो. तो इसलिए जब ये जो मैंने बोले मेंटर कह से, दे गिव यू अ कॉन्फिडेंस कैन यू कैन डू इट. No, I asked you because
that's you have been a mentor for so many people. So wanted to ask you कि आपके मतलब तुम्हारे लाइफ में सर्टन डॉक्टर्स आते हैं बेसिकली, नहीं तो तुम्हारा कोई तो गाइड आता है, बराबर तो आपको जब हेल्प करते हैं तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है, इसके कारण मैं लैब शुरू किया मेरा खुद का, दैट गिव मी कॉन्फिडेंस कि अरे मैं इतने डॉक्टर के साथ बात कर सकता हूँ एंड आई कैन टॉक टू देम इन देयर लैंग्वेज इन द सेंस आई एम नॉट अ डॉक्टर बट सर्टन जो इंटरेक्शंस रहती है, वो जो डॉक्टर मुझे पूछता है सर्टन क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टेस्ट, राइट वेदर आई एम एबल टू एक्सप्लेन इन अ राइट वे सो ही अंडरस्टैंड, वो जो रहता है ना, वो जब भी मुझे पता चला कि आई कैन कम्युनिकेट विद द डॉक्टर इन द राइट वे एज दे वांट, एंड एक सर्टन लेवल का रिस्पेक्ट आ जाता है फिर वैसा. अभी फील्ड में यू पीपल नो यू, दे नो योर वर्क, राइट दे नो योर स्किल. ये जो मैंने शुरू किया है तो आई हैड सर्टन डॉक्टर्स हु हैज फेथ इन मी एंड दे हेल्प मी and they are still means I am still working with those people and is the relationship later on. I wanted to ask you is one advice you would like to give young technicians out there, not necessarily कि आप PFT की या pulmonary की, DMLT हो गए या कोई हो गया, like young technicians, young doctors हो गए, one advice because you have worked in probably good like very well-known government hospitals, private hospitals. I worked with the best best doctors, chest physicians in India. Exactly. So you have worked with the best healthcare workers and since last 5 decades. So according to you, and आज आप काफ़ी young doctors, and that includes me also, you have worked with them, you have seen them. What advice would you like to give them, including technicians? See, technician के हिसाब से basically you have to develop your skills. अब स्किल्स डेवलप करना है मीन्स हर रोज जाके मैं ये बराबर इतना ही डाल रहा हूँ, दैट इज नॉट द स्किल. द स्किल इज द एक्यूरेसी ऑफ योर टेस्ट. अ स्किल इज द न्यू टेक्नोलॉजी यू आर एक्सेप्टिंग. आपको मीन्स आपके फील्ड में जो नया हो रहा है, नए जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स आए हैं, नए जो रिसर्च डॉक्यूमेंट्स है, यू हैव टू रीड इट. तो ये आप अपडेटेड रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप पेश अभी इफ इज रिलेटेड टू सपोज एनी टेस्ट, तो आप जो रिसर्च पेपर आते हैं तो आप जब खुद के रिलेटेड जो टेस्ट है आप पढ़ेंगे कि भाई ये ऑब्जर्वेशंस आई है, तो जब भी आप टेस्ट खुद करते हैं पर्टिकुलर इसकी, तो आप देख सकते हैं कि भाई ये ऑब्जर्वेशंस वो पर्टिकुलर स्टडी में दी है, मुझे मिलती है कि नहीं मिलती है, नहीं मिलती है तो क्यों नहीं मिलती है. और सपोज मेरी सब डॉक्यूमेंट्स सच है तो वेदर देर इज सम प्रॉब्लम विद दैट प्रीवियस पेपर, सो योर माइंड इज कंटिन्यूसली ऑन थिंकिंग द थिंग्स, ये सच सही है क्या गलत है, अभी मेरा गलत हुए तो क्यों गलत आ रहा है, और मेरा सही है तो उनके उसमें क्या लैक्यून है जो उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन किया उसमें डेटा कलेक्शन गलत है, सैम्पल कलेक्शन गलत है, काफ़ी है एंड इट हेल्प्स यू. राइट, बट व्हाट यू आर सेइंग बेसिकली मींस एक माइंडसेट चेंज होना चाहिए डेफिनेटली. जस्ट जाके मैं बिकॉज मोनोटोनस होगा तो आप हेल्थ केयर फील्ड में हो, यू आर वर्किंग विद लाइफ पेशेंट्स, यू आर वर्किंग विद अ लाइफ ह्यूमन बीइंग, राइट? सो तो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए. बराबर. तो ऑल्सो एनी फनी इंसिडेंट और मेमोरी जो, बिकॉज पेशेंट स्टोरीज होंगे आपके पास, काफ़ी होंगे पेशेंट स्टोरीज का, कोई एक पेशेंट स्टोरी. देखो अभी 2-3 प्रॉब्लम्स आते हैं. अभी जो हमारी टेस्ट है ना, वो आपको मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बट इट्स द पेशेंट ड्रिवन टेस्ट. जैसे मैंने डॉक्टर ड्रिवन टेस्ट, पेशेंट डिपेंड, इट्स टोटली पेशेंट डिपेंडेंट. पेशेंट गलत करेगा तो रिपोर्ट गलत आएगी. सो आई एम जस्ट देयर टू गाइड द पेशेंट हाउ टू डू द टेस्ट. अल्टीमेटली पेशेंट को करना है, और पेशेंट ने सही किया है कि गलत करना है वो देखना मेरा काम है. बराबर. आई विल फर्स्ट थिंग एक्सप्लेन यू सम पार्ट्स, पेशेंट क्या दिमाग खराब करते हैं. अभी एक he was a pilot about 55 years. Pilot. Okay. And he was grounded because he was a smoker and he could not fly. मीन्स उसकी लंग फंक्शंस और बाकी जो उसके कंप्लेंट्स थे उससे उसको
फ्लाई करने को नहीं देते थे। 5 साल तो ग्राउंडेड था कोच, और उसको अभी वापस ये करके लाइसेंस रिन्यू करना था। डॉक्टर महाशूर उन्होंने वो पेशेंट मेरे पास टेस्ट के लिए रेफ़र किया, तो मैंने टेस्ट की तो उसकी टेस्ट सीवियरली एबनॉर्मल आ रही थी। बहुत बार करने के बाद ही वही रिजल्ट आ रहे, तो मैंने बोला कि आपकी टेस्ट, क्योंकि वो बोल रहा था कि मेरा नॉर्मल रिपोर्ट तो नहीं करके दे सकते हैं। बराबर। तो उसने एक पेपर निकाल के दिखाया मेरे को, बोला देखो मैं कल फलाना जगह टेस्ट करके आया, वो रिपोर्ट टोटली नॉर्मल है। अभी एजुकेटेड पर्सन ही इज ट्राई टू फाइट विथ यू कि तो आप गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। बराबर। ठीक है, और आई वॉज डैम श्योर कि आई मस्ट बी दैट कॉन्फिडेंट कि मेरी मशीन सही है। बराबर। और ये बंदे से भी मैं अच्छी तरह से टेस्ट करवा ले रहा हूँ, लेकिन उसका रिपोर्ट ऐसे आ रहा है। तो मैंने बोला देखो भाई, उसका पहले पुराने रिपोर्ट भी काफ़ी थे उसके पास। बोला देखो तुम्हारी ये जो पुराने रिपोर्ट है ना, सब मेरे रिपोर्ट से मैच हो रहे हैं, और आपका कल का एक ही रिपोर्ट है वो सिर्फ नॉर्मल आ रहा है। आपको जो लंग डिसीज है वो कभी भी नॉर्मल होने वाला नहीं है। अच्छा, आपने डायरेक्ट बोल दिया रिपोर्ट नॉर्मल नहीं होने वाला है, तो आपने से बोल दिया? हाँ बोल दिया। ओके। तो एक तो एक काम करो, मैं तुमको चार्ज नहीं करता हूँ, तुम दूसरी जगह जाके टेस्ट करके आओ, बिकॉज वो काफी झगड़ा क्यों करते बैठेगा। बराबर। और आप ये रिपोर्ट लेके जाते हैं, तुम्हारा नॉर्मल रिपोर्ट, और तुम्हारे पुराने रिपोर्ट देखने के बाद में आपको पहले ही बोल देंगे आप झूठा काम करके आए, घर जाओ, सीधा बोल दिया। ये तो इसने दिया ओके यू डू द टेस्ट एंड व्हाट एवर योर रिपोर्ट। ये तो पहले यानी मैंने बोला कि आपने दूसरा किसी को भेज के रिपोर्ट करवा के लाया है। तुमने बोल दी हम, और वैसे ही हुआ रहेगा शायद। वैसे ही हुआ है, क्योंकि देर आर सर्टन थिंग्स जो फिक्स्ड है ना। उसको जो लंग प्रॉब्लम था, COPD वो बोलते हैं, वो कितना भी करे ना उसका रिपोर्ट नॉर्मल दिखने वाला ही नहीं है। और जिस ढंग से उसके 5 साल के रिपोर्ट थे एवरी ईयर टेस्ट करके, उसका एक ये रहता है ना, ट्रेंड रहता है। बराबर। और मेरा रिपोर्ट उसमें ट्रेंड में बैठ रहा था, और वो कभी भी नॉर्मल नहीं होने वाला है। यानी कि इसने किसी को भी भेज के वो टेस्ट करा के लाया था। ऐसी दूसरी भी एक ये है, पेरेंट्स हाँ बोलने को राजी ही नहीं है। दिस गर्ल वॉज गोइंग फॉर द एयर होस्टेस। एक जगह मैं टेस्ट करके देता था, आई वॉज अटैच टू वन सेंटर, तो शी केम ओवर, उसका टेस्ट किया, एबनॉर्मल आ रहा था। तो मैं लगा इसको अस्थमा मेडिसिन दे के टेस्ट करना चाहिए। तो उसके पेरेंट्स बोले क्यों उसको तो अस्थमा नहीं है। बोला लेकिन ग्राफ में तो दिखा रहा है कि उसको प्रोबेबिलिटी अस्थमा है। तो देन दे स्टार्टेड फाइटिंग विथ मी। बोला ऐसे कैसे, कल तो हमने फलाना जगह टेस्ट किया, वन ऑफ द रेप्यूटेड लैब इन मुंबई, प्राइवेट लैब्स, हम वहाँ किया है, और आप ऐसे कैसे बोलते, कल का रिपोर्ट है। बोला भाई रिपोर्ट लेके आओ। तुम्हारे लड़की को इंस्टेड ऑफ रिफ्यूजिंग यू शो टू अ चेस्ट फिजिशियन, क्योंकि लॉन्ग रन में उसको प्रॉब्लम होने वाला है इफ यू डोंट टेक केयर राइट नाउ। और एजुकेटेड फैमिली, उसको एयर होस्टेस के लिए फिट करने हैं, इसलिए सब छुपा रहे थे। तो फिर वो रिपोर्ट लेके आए, मैंने रिपोर्ट देखा, नंबर्स देखने के बाद मैंने तुरंत बोला, एक तो बोले कि ये रिपोर्ट ही बड़ा। बोलते क्यों? बोला तुम्हारी बच्ची की हाइट कितनी है? 5 फुट 2 इंच। देर आर सर्टन स्टैंडर्ड्स फॉर ए इंडियन गर्ल ऑफ 5.5 फीट 2 इंचेस, उसकी रीडिंग इतनी आएगी, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स है। बराबर। तुम्हारे बच्चे की रीडिंग इतनी बता रही है, यानी उसकी रीडिंग 2 लीटर नहीं तो 2.25 लीटर तक मैक्सिमम आ सकती है कैपेसिटी। राइट। उसकी कैपेसिटी वो उन्होंने जो रिपोर्ट दिया था, जहाँ से कहा 6 लीटर बता रहे थे। अभी 6 लीटर कैपेसिटी किसकी आएगी जिसकी हाइट 6.5 के ऊपर है, दैट टू मेल नॉट फीमेल। तो लोग ऐसे भी झगड़ा करते हैं। मतलब तो मैं कन्विंस किया कि भाई इम्पोर्टेंट है उसको अस्थमा ट्रीट करना। बराबर। फिर जाके उन्होंने किसी डॉक्टर को दिखाया, फिर 1 हफ्ते के बाद टेस्ट करने आए तो रिपोर्ट नॉर्मल थी। अभी अल्टीमेटली दैट हॉस्पिटल जिसने पहले रिपोर्ट दिया था 6 लीटर की, तो गलत। अभी उनकी मशीन ही खराब थी, उनको मालूम ही नहीं कि हम लोग क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। बराबर। मशीन ही खराब थी। 6 लीटर किसका भी मैं खुद करूँ तो मेरा भी 6 लीटर नहीं आएगा। ऐसा कभी हुआ है कि बिकॉज वो आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें लाइक यू हैव टू ब्लो इट राइट, टू ब्लो इन इट राइट, या समथिंग लाइक जो
तो हमारे पास उसके लिए जो कॉप्स ड्रंक ड्राइविंग के लिए टेस्ट करते हैं, समथिंग सिमिलर, राइट? यू हैव टू ब्लो इन इट। ऐसा कभी हुआ है, लाइक एनी फनी इंसिडेंट व्हेन पीपल हैव टू ब्लो? अच्छा, कैसे अभी रहता है, एक बार ऐसे हुआ कि एक पेशेंट आया था, हाँ, नवरात्रि का सीजन, जिस ढंग से वो टेस्ट कर रहा था ना, आई मीन ऐसे कुर्सी में जंप करके टेस्ट कर रहा था, तो आई वॉज नॉट गेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द टेस्ट, हाँ, बिकॉज हिज ऑल एनर्जी इज बीइंग वेस्टेड इन द बॉडी मूवमेंट। राइट। अभी क्या करो, उसके ग्राफ से लग रहा था कि वो ठीक ढंग से बैठ के करेगा ना तो तुरंत टेस्ट हो जाएगी, लेकिन उसके पहले हम बता के मैं थक गया हो, मतलब अभी क्या करे। तो कभी कभी तुम्हारे इधर से ये हो जाता है, मतलब कल नवरात्रि को गया था क्या, तभी फुल नाइट नवरात्रि चलती थी, हाँ, तो बोलता हाँ दांडिया खेला, हाँ, तो मतलब वहाँ दांडिया खेला, अभी क्यों खेल रहा है? फिर उसने ऐसे चुप बैठ के एकदम स्टिफ बैठ के टेस्ट किया, अरे सेकंड नेक्स्ट सेकंड his test was done. Got it. But prior to that I was struggling for 15-20 minutes Right. to get his, क्योंकि he was jumping in the chair, so I was not getting the results. तो ऐसे कभी हो जाता है। अभी there are funny things like ये जो हमारी टेस्ट है वो हिंदी में आप बात करें, अभी बेसिकली हम बोलते हैं कि you have to breathe in full and breathe out with force completely. बराबर। That's the USP of the test. अभी हम लोग मराठी में बोलेंगे तो आपल्याला श्वास पुरा घ्यायचा आहे आणि जोरात पुरा श्वास सोडायचा आहे। अब यही हमें हिंदी में बोलूँ तो श्वास को हम सांस बोलते हैं, तो आपकी सांस को जोर से खींचना है और बाद में आपके सांस को जोर से बाहर निकालना है। ओके, अभी जब भी हम मोनोटोनस हो जाते हैं ना, तो दैट हेल्प्स यू टू रिलीज योर टेंशन, आई मीन बोरिंग जो रहता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि सांस और बहू आती है। तो एक बार ऐसे हुआ है, मारवाड़ी पेशेंट थी, बहू टेस्ट को बैठी थी और सांस टिपिकल उसके पीछे टेस्ट बराबर करती कि नहीं, तो मैंने बोला तू सांस को जोर से खींच और जोर से धक्का मार सांस को, देन वी चेंज द वर्ड स्पेसिफिकली टू एंजॉय दी, और वो लड़की को तुरंत हिट हुआ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शी स्टार्टेड लाफिंग, जोक होता था सांस, वो सांस पीछे खड़ी थी और हम बोल रहे थे कि भाई जोर से धक्का मार सांस को, तो शी एंजॉय, बट शी डिड द टेस्ट। सी बेसिकली समटाइम्स इज द रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द टेस्ट, सो आई हैव टू क्रिएट अ रैपो विद दैट पेशेंट, सो दे विल डू द टेस्ट वेरी फास्ट। तो इसमें जोक भी हो गया, पेशेंट भी एंजॉय किया, सांस ने भी सीरियसली नहीं लिया, एंड ऐसे चलते रहता है कुछ ना कुछ। डबल मीनिंग हो जाते हैं लाइक। नहीं, अभी कभी क्या होता है, अभी आई वांट सी हमारे टेस्ट में क्या है कि पेशेंट हैज टू ब्रीथ मिनिमम 6 सेकंड्स। ओके, 6 सेकंड ब्लो करेंगे ना तो ये टेस्ट आपकी सही आएगी। कभी कभी कम भी हो सकता है डिपेंडिंग, बट देन फ्रॉम द ग्राफिक्स वी नो वेदर। तो कोई पेशेंट ऐसे बैठते हैं और टेस्ट करना, बाकी सब टेस्ट बराबर करते हैं, बट दे डोंट गो टू द मैक्सिमम, वो 3 सेकंड में ही बंद कर देंगे। मैं थक गया हूँ, इरिटेशन होता रहेगा, मैं थक गया हूँ। अरे भाई करो, तुम इतना कर सकते हैं, एंड देन यू गेट मैड, क्योंकि हर पेशेंट को है ना हमको टेस्ट करके दिखानी पड़ती है। तो यू इमेजिन 10 पेशेंट्स के बाद में आपकी क्या हाल होती होगी, आप भी खुद थकते हैं। हम भी थक जाते हैं। तो पेशेंट को मैं कभी कभी ऐसे sarcastic, see we are Kokani people, बराबर, so we are little sarcastic sometimes, बराबर ना, बराबर। तो मैं बोलता हूँ आप कहाँ रहते हैं, तो बोलेंगे मैं विरार रहता हूँ। तो बोला भाई तुम विरार जाना है तो बोरीवली में उतरते हैं क्या? नहीं। तो मैं अभी बोरीवली में क्यों उतर रहा है, तू विरार तक तो जा। डिफरेंट वेज वी ट्राई टू कन्विंस देम। नहीं तो पूछते हैं कि आप कौन से माले पे रहते हैं, वो बोलेंगे कि मैं 3 माले पे रहता हूँ। तो मतलब तो थक जाते हैं तो 2 माले वाले के घर में जाता है क्या? नहीं। तो यू पुट एन एनर्जी टू गो टू योर 3rd फ्लोर, राइट, तो एनर्जी तो डालो। बराबर। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 माले पे जाओ, तुम 2 माले पे क्यों रुके? एंड देन डिड डू द टेस्ट। कहने का मतलब है कि यू हैव टू समटाइम्स एक्सप्लेन टू द पेशेंट, थोड़ा sarcastic वे, किसी को गुस्सा आता है बट लॉट ऑफ पीपल टेक इन अ राइट वे। लेकिन पेशेंट मिलते रहते हैं, एजुकेटेड रहते हैं। अभी बीच में एक पेशेंट मिला था, ही हैज कम फ्रॉम अमेरिका, उसकी मदर का टेस्ट करना था। द ग्राफिक्स शो दैट हर रिपोर्ट विल कम नॉर्मल प्रोवाइडेड शी ब्रीथ्स आउट
to a certain time factor. Right. But she was just breathing about 2 seconds. So I was not getting the correct capacity. Unless until I can't get correct capacity, because ultimately the report is nothing but the mathematical calculation. आप टेस्ट कम करेंगे तो तुम्हारा डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, तो पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेंज हो जाती है. बराबर. तो टोटल इंटरप्रिटेशन गो हेवायर. तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई आपकी माँ को आप समझाओ. तो इतना गुस्सा हो गया वो आप पे, मेरे ऊपर. आपको समझते नहीं मेरी माँ कितनी थकी है. मतलब लेकिन शी हैज टू पुट एन एफर्ट, सम एफर्ट. मेरे को टेस्ट करना ही नहीं है, आपको समझते हैं. ही वेंट एंड रोट अ कंप्लेंट एवरीथिंग. बट अ गाय हु हैज कम फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, बराबर, और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई ये ऐसे रहता है. ही डिडंट अंडरस्टैंड एंड वी कांट रिलीज एनी रिपोर्ट. सी बेसिकली कभी कभी पेशेंट के साथ 1-1 घंटा हम काम करते हैं. बराबर. एक पेशेंट एक नॉर्मली हाफ एन आवर में होनी चाहिए, लेकिन देर आर समटाइम्स नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट. 3-3 घंटे हम वो पेशेंट के ऊपर ट्राई करते रहते हैं. लेकिन इफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द पेशेंट परफॉर्मेंस, आई डोंट रिलीज द रिपोर्ट. मुझे पैसे नहीं चाहिए. उतना मैंने एथिकली रखा है कि भाई रिपोर्ट मेरे हिसाब से नहीं है, पेशेंट ने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्ट नहीं की है, तो भले मैं उसके ऊपर 2 घंटा काम करूँ, 3 घंटा काम करूँ, आई डोंट चार्ज. राइट. एंड आई मेड माई स्टाफ ऑल्सो टू फॉलो द सेम. तो हमारे यहाँ से एक भी गलत रिपोर्ट नहीं जाएगा, ऐसे हम देखते हैं. बराबर. लेकिन ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको समझता नहीं है, तो ठीक है भाई. ऑल्सो आप कोल्हापुर बहुत ट्रैवल कर, लाइक रिसेंटली since the last few years you have been traveling to Kolhapur a lot. So what's your connection with Kolhapur? My education, though we are basically from Chiklun, my maternal uncle and those were in Kolhapur. और इसलिए तो मैं उनके बचपन से मैं उनके साथ था. So आपने schooling वहाँ की है? स्कूलिंग मेरी वहाँ हुई. So you love Kolhapur? Yeah, it's basically कैसे है कि रूरल और अर्बन का थोड़ा टच है. पहले के ज़माने जो पुणे में था, लेकिन अभी पुणे हैज बिकम टोटली अर्बनाइज्ड. बराबर. बट कोल्हापुर है स्टिल, और पुणे छोड़ने के बाद है ना, दैट इज द ओनली सिटी विच यू एंजॉय. बीच में कराड़ और सातारा रहते, बट समहाउ आई एम नॉट. कोल्हापुर थोड़ा लाइवली है, वेदर अच्छी है. शायद मेरा बचपन वहाँ गया इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है. लोग भी अच्छे हैं. एंड यू गेट द, लाइक यू सेड, दोनों मिलता है, अर्बन भी रूरल भी मिलता है. थोड़ा शहर की फीलिंग, थोड़ा गांव की फीलिंग. और वेदर जो बॉम्बे की वे, वहाँ द मोमेंट यू गो देयर यू आर रिफ्रेश्ड. सो लाइक, बट जब आप कोल्हापुर में होते हो, व्हाट्स वन थिंग अबाउट लाइक मुंबई विच यू मिस द मोस्ट? टाइम. बॉम्बे में देखो, अभी ये जो मैंने मेरी खुद की लैब शुरू की जी, बिफोर दैट आई वांटेड टू स्टार्ट इन पुणे और कोल्हापुर. तो मैंने तभी सर्वे किया जी. तो वहाँ कैसे कि टाइम सर्विस, इफ आई एम गिविंग अ सर्विस यू हैव टू पे मी. राइट. जो एटीट्यूड वहाँ नहीं है. सेकंडली वहाँ टाइम का किसी को फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, वैसा. हाँ, या आप मैं बोलूँ मैं 10 बजे आता हूँ, 10 बजे कोई भी नहीं आएगा. वो दिन आएंगे तो बहुत बड़ी बात है. आएंगे नहीं. बराबर. देन यू आर, जो मुंबई में है ना, आप योर टाइम इज द मनी इन मुंबई. एंड सिंस आपका इतना पूरा ये गया है, तो टाइम के हिसाब से देखें तो मुंबई इम्पोर्टेंट है. और वो वहाँ हम लोग मिस करते हैं. तो थोड़ा इरिटेशन हो जाता है. बट एक बार वो लाइफस्टाइल की आदत हो गई तो हम भी ऐसे बोलेंगे, आते हैं नहीं आते हैं. स्लो लाइफ है, एंड देन थोड़ा लाइफ कूल है. मीन्स कैसे, वो भी कूल होने के कारण कैसे है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह 20 मिनट में जा सकता हूँ. मैक्सिमम टाइम फैक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू वन एंड टू अनदर एंड इज मैक्सिमम 20 मिनट्स. यहाँ 20 मिनट में वही एरिया से एक ही 1 आवर जाता है. बराबर. From here to Andheri station, yeah, it takes 1 hour. Whereas over there, same distance in शहर के बाहर पहुंच जाओगे. तो लोग कंफर्टेबल है कि भाई 10:15 बजे बोला है ना, मैं 10:15 बजे घर से निकलो. तो अब थोड़ा प्रॉब्लम उसमें आता है. But otherwise, I mean, you love नहीं, Kolhapur. if you are just want to relax, time factor important नहीं आपके लिए, तो you enjoy. लेकिन आपको कुछ खुद का काम करके लेना है, तो you miss मुंबई. Okay.
So we'll come to our last section, which is the rapid fire section. Yeah. Where we'll ask you थोड़े rapid fire questions and आपको जितना हो सके जल्दी आंसर करना है. Your current favorite TV show? टीवी I mean, do शो you- मीन्स do you- अमिताभ का जो अभी कौन बनेगा करोड़पति, हाँ. I enjoy it the most. Now also? Now also. Okay. He make it too lively. He's like that. मतलब वो Yeah. apart from KBC और कोई show आप any web series are you watching? वेब सीरीज मराठी में एक अच्छी आती है, कौन सी? एक भाड़ीपा करके. वेब सीरीज ऐसे नहीं बोल सकते हैं अभी. इट इज यूट्यूबर बेसिकली. Okay. उनका मुझे लगता है अभी OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है. एक नई सीरियल उन्होंने कुछ बनाई है, बट So आप इट्स इट्स एक्सक्लूसिव इन मराठी. Okay. भाड़ीपा. भाड़ीपा. It comes on YouTube. YouTube. Okay. It's good. You enjoy And that? I enjoy it too much. Okay. What is it about? There are different it's basically a satire. Okay. Okay. On various topics, like they have put recently some kanda poi programs. Means, kanda poi means शादी के लिए रहता है. बराबर. तो उन्होंने क्या, एक पुणे की लड़की और उसकी माँ, और वो अलग अलग यानी कोकण में जाएगी, जलगांव में जाएगी, कोल्हापुर में जाएगी लड़का देखने, और वो जो लैंग्वेज का फर्क रहता है ना, समझ गए. और एटीट्यूड हर एक की, वहाँ हर एक एरिया की खुद की एक एटीट्यूड रहती है. सही सही. उसके ऊपर बनाया है स्मॉल सटायर्स, बट दे आर वेरी गुड. Got देयर आर it. डिफरेंट थिंग्स. Okay. One thing you love about being a pulmonary technologist? I have met a lot of people. Meeting people. Meeting people, because see, each person is a different person. So you have to handle, though the taste is monotonous, each person is a different thing. So And that makes it unique. yeah. Your favorite movie? Or movie, I mean, you can mention more, but then any one जो आपके दिमाग में आता है. When I say favorite movie. I mean, Three Idiots I enjoyed the most. Okay. I mean, basically I like the movies which are humorous. Okay. मैं सीरियस मूवीज नहीं देखता हूँ. अच्छा. सच बोले तो जी. नहीं देखता हूँ. So उसके अलावा भाई अभी सिंघम रहता है, ये जो अभी रिसेंटली मैंने मूवी देखी कि जिस ढंग से वो मूवीज आ रही है, probably I won't enjoy. okay. लेकिन मराठी मूवीज काफी अच्छी आई थी बीच में. तो मराठी मूवीज आई एंजॉय विद गुड कंटेंट. If you were not a pulmonary technologist, what would you be? Probably recently Recently, हाँ recently. I observed that I enjoy cooking. So a cook, a chef. A chef you can call it. So probably I would have been a cook and a chef. वो अभी रिसेंटली एक 3-4 साल पहले मेरे से एक्सप्लोर हुआ है कि अरे मैं एंजॉय करता हूँ कुकिंग. यानी मेरे इसमें इनसाइड कुछ है. So अगर आप टेक्नीशियन नहीं होते तो आप तो probably I could have been chef. okay. You can still open a restaurant in Kolhapur or a cafe. So being on food, your favorite current food cuisine? चाइनीज में जाए तो मैं मेनलैंड चाइना जैसे अच्छी होटल है. लेकिन मैं भाकरी, झुनका और जो ठेसा बोलते हैं ना, बराबर. मेरे बच्चे मेरे को बोलते हैं, बट डैडी हर बार आप यही क्यों खाना खाते हैं? बट आई एंजॉय. मैं ट्रैवल करता हूँ, रास्ते में कोल्हापुर जाते समय जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स है, आई आस्क फॉर इट. Any restaurant you can recommend where you get good झुनका भाकर? कोल्हापुर रास्ते पे एक्चुअली बहुत है, लेकिन पुनः सातारा में प्रांजलि करके एक होटल है, प्रांजलि हाईवे पे. उधर नॉनवेज भी अच्छा मिलता है और वेज भी अच्छा है. Okay. What's the best advice you have received? Considering आप काफ़ी लोगों को एडवाइस देते हैं तो नहीं भी देखो, मैंने मेंटोर के हिसाब से जो भी बात चल रही थी, तो मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती. मेरे एक फ्रेंड थे चावले करके, ही इज अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, ही आल्सो एक्सपायर्ड. उनकी एनर्जी देख के हमको लगता है कि अरे ये इतने क्वाइट सीनियर टू अस, इतने सीनियर हो के भी वो हर रोज कुछ ना कुछ नया काम लेके आएंगे. वी विल ट्राई दिस मीन्स in terms of giving the physiotherapy to the patient, but at the same time you have to document कि ये help होता है कि नहीं. Right. At the age of 55 he did his PhD. So always मैं उनके अरे ये आदमी इतना कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते. बराबर. और स्किल डेवलपमेंट तो हर एक को करना ही है. एंड लाइफ में अच्छे लोग मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, दिस लैब, आई हैड गुड पीपल विथ मी. डॉक्टर प्रभु देसाई, Dr. Faisal Deshmukh, Dr. Vidya Doshi, Dr. Mahashur also helped me. Your father
and Dr. Prabhu Desai strongly stood with me. So it is important that you need the strong support, and strong support comes with your relationship बराबर. and your skill. If my relationship is good but I'm not good at work, who will give me the work? But what was the best advice you got from them? It's the basically how to have the relationship. यानी किसी को हर एक के साथ जब भी रिलेशनशिप रखते हैं तो यू शुड बी ओपन विथ एवरीवन. हमें झूठा काम नहीं करना है. रिलेशनशिप बनती रहती है. Okay, I'll take that. Your favorite place you have worked at? KEM and Bombay Hospital. Okay, and why? KEM gave me the base of my career, and Bombay Hospital gave me the doctor over there helped me to move forward in my life. अभी इसमें ये इसके कारण I went all over the world because of like KEM Hospital training, and Bombay Hospital, that mentor helped me how to communicate and how to go up. So I did a lot of tests abroad. Even I gave a lecture in Sri Lanka to the pharma people. I went to Jamaica. I mean, this knowledge and help took me all over the world. Okay, I'll take that. Your favorite holiday destination? I can call it London and San Francisco, but it has some background story. Okay. Like you always wanted to go there? Yeah, it was my dream. Acha. So London Bridge, you have read about it, London Bridge and those things. So I wanted to walk on that bridge someday. So because of my career, I had been to some accreditation to London, and I had an opportunity to walk. So I walked ample time on that bridge to just make sure that I'm at the bridge. And that zigzag road in San Francisco, in one of the movies I have seen, the zigzag English road, movie, and that was my dream to walk on that road, and it did happen. Any new destination any new destination or new dream you want to, dream place you want to travel, so that when you say that, hopefully in the near future you'll get a chance to go there? Yeah, I want to see Switzerland. Switzerland. Okay. So by the time and not Switzerland, then any Scandinavian country. People say that it's one of the Norway, best. Iceland. Norway, it's the best, they say. But I have an opportunity to see the Iceland because of my one of the projects. I was there for about 10 days, a week or 10 days for training. And it was a lifetime experience. Right. Last question. One thing you wish to change in the pulmonary, technologist space? See, I think the one who are starting the pulmonary lab or who wants to be a technician, they have to get themselves trained from somewhere. Okay. ऐसे ही लैब शुरू मत करो और लोगों को झूठा रिपोर्ट मत दो. Training is I feel that I should start regularly putting this training period. I have my 2 colleagues, one from British Candy and one from Hinduja. I'm going to link your email ID in the description down below. So anyone who wants to contact you for any training or just to know more about this whole, they can directly email you and contact you and know further about it. It's important. I'll do that. Thank you, Mr. Shetty, for taking out time for this podcast. Again, great having you on this. And again, got to learn a lot of new things. Something which is not my field, but related to healthcare. Got to know about PFT, who does it, who should do it, who should not do it, what is the right way to do it, and much more. And hopefully we'll again have you again on the podcast soon. Yeah, thank you. And Definitely. So thank you. It was lovely having you, and we'll hope to see you soon again. I also enjoyed the things. Thank you, Arif. Thank you. Okay. We'll see you soon. Thank you. Yeah, definitely. ठीक होगा क्या? क्या मैं ज़्यादा बोला? नहीं परफेक्ट था. आपको कैसा लगा?
मेरे को ठीक लगा. थोड़ा आगे पीछे मीन्स इट वाज. नहीं चलेगा, परफेक्ट है, वैसे तो चाहिए, आगे पीछे थोड़ा वो हो जाता है.